Good evening, guys. Good evening. Good evening, sir. You need to stand up and listen. You don't do this at your school? At your here in UT? No. Sir, good evening. Okay. So first lecture of geography for you guys. Yes or no? Yes. Okay. Somebody threatened you. Aisa nahi na? Happy to see me or not happy? I am very much happy to see. First lecture. ये भाई साहब मैं आते समय कुछ ऐसा लिप्स में हाथ डाल के पैर ऊपर डाल के बैठा था. What is this? क्लास में बैठा है ना दोस्त? कैसे बैठते हैं? अच्छे स्टूडेंट. ठीक है? That was your break, but understood? Okay. So which schools are really going on great guns for the portion of geography? First chapter done, second chapter done. Yes, sir. 2 chapters. 2 chapters done. Second 1 chapter is done. First Okay. chapter is done by Completely done. Which school are you from? And one way. Same school. Yes. How about you? And not well. Relax. Okay, guys. For geography, the first chapter of economics, that is story of village Palampur. Normally, if it is reflecting in your timetable, but I will start with a very interesting chapter called India size and location. Am I correct? Because that is what we are planning to do, and that is more interesting than what we are going to have. Correct? Okay. Let's start with, and there are some 2-3 things I am very particular and very strict with my students. क्या रहेगा? पूछ रहा हूँ. क्या रहेगा? पहले तो अंदर आते ही. You understood? Second thing will be, you have to bring your fair notebook and your textbook always. Textbook belongs both to your NCERT and your volume. How many did not get the volume, UT volume? Everyone got it? Everyone got it? You maintain one separate notebook for geography and economics. Because history and history teacher comes, I also come same day. But then if you are having a fat notebook, then maintain same notebook. If it is a thin notebook, keep separate. क्योंकि कभी-कभी मैम का पूछना आगे रहेगा, कभी मेरा रहेगा. Are you understanding? So today only my 10th standard CBSE 2 students were out of my class because they didn't bring the fair notebook. I think you are not outstanding, na? Outstanding कोई भी नहीं है पढ़ाई में. So let us write today's date. You write India size and location. India size and location. And always some typical method of my teaching will go on. If your margin is wide enough, maintain that margin. If not, create a separate 4-inch line like this, where we'll be putting subtopic and going to the main topic. If your margin is big enough. क्या हो सर्च कर रहा है और जल्दी करो. फर्स्ट पहला मेरा इंट्रोडक्शन है ना, चाहिए तो इंट्रोडक्शन में क्या तो लिखा. माय नेम इज अलगेश. ओके, ALAGESH, एंड इन योर टाइम टेबल ऐसा दिखेगा. करेक्ट? बट माय फुल नेम इज दिस. बड़ा डिफिकल्ट नाम है, पापा ने रखा है. I can't change it. ठीक है. So this is my first name. In your timetable यही दिखेगा.
So you have to remember and eco. Or kuch batao. For last 15 years, I've been into teaching, and some good number of years I'm attached to UT, close to 9 or 10 years I'm. And I don't know my method of teaching, but every batch really likes my mode of teaching. I hope you do give me that same favor. I will not be bossing over you. Thoda bahut karunga for your studies. Will do? You can happily share your things of your school portions or anything related to studies. ऐसा कोई नहीं मैं काट जाऊंगा ऐसा कुछ नहीं. ठीक है? जितना मैं डरावना दिखता हूँ वैसा है नहीं. बट बन जाऊंगा बहुत मस्ती करें. Okay. So if I talk about we can write a subtopic. Can I get one volume? My volume is not good. I'll give it that. The first one that we will be studying, you can write like this: 1, 2, correct? 3. No need to leave the space. We are going to pull it here. The first one we are going to understand location. Location of what? India, correct? Second one, they've given Tropic of Cancer. No need for that because it will be size. Third one, come on, repeat the करो. मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ, repeat भी तो कर रहा हूँ. चलो, first one, everyone. Location. Second, Size. boundaries. Boundaries of what? India only, पक्का ना? Then the next topic that I have to explain and give it to you in your notebook is India and the world, and India and the neighbors. India and the world. 5, India and her neighbors. India and her neighbors. Up it on these broad headings. Is that AC is also working? Do you need that AC? India and her neighbors. NEIGHBOURS. Okay. Now, when I say the word location, we are going to understand in this side. If I say 1, I will say point number A, point number B. So, we are going to study latitudinal extent. Which extent? And what is the other one? Come on. Longitudinal extent. Now open the volume to this heading. Boys will say me the latitudinal and girls will tell me the longitudinal extent. है इधर ही तो है. Extent size देखो ना. देखो longitude of India. Boundaries का नीचे first question दिख रहा है. Longitude of India is, Dika? Come on. Longitude. Who is bound to say? Girls. Come on, girls. Look at page number 134. Come down to question number, whatever is the question. First line. Bolna. Longitude is how much? 68 degree, 7 minutes to the east. Correct? And? 1970. Very good.
25. East. East. Just look at this. Look at this. Don't write. If at all there is one more number coming like this, they will put 2 dash here. What does it mean? This will be second and this will be minutes. Are you understanding what I'm saying? I mean, now we are only taking minutes. This is 97 degrees, 25 minutes, 68 degrees, 7 minutes. Write down everyone longitudinal extent. Be like a horse. Boys will have to tell me that latitudinal extent. You have to learn this, huh? Now you are only writing, but you have to very quickly learn it. Okay, let's all find out where is latitude given. Come on, boys. Yes. 8 degree 4 minutes. Am I correct? 82 nahi rahega. 8 degree 4 minutes. That is the midpoints of this latitude. So wrong hai. Aur upar jao. Kahin to latitude likha achhe se dekho. If you don't see it in the paragraphs, come to the map. Are you seeing that north-south line? So first line is in Kanyakumari. This map, this map. So you start from down. 8 degree 4 minutes. Come on, say. Boys only. Boys na wo bhi hai na piche. Bolo. Say 8 degree 4 minutes to the north to how much degree? Up, go up. Jammu and Kashmir. 37 degree 6 minutes to the north. This is clear to you guys? If that is not the case, look into the globe. Correct? This is equator. This is was वही बच्चे को मालूम है, बाकी लोग को नहीं मालूम. Come on, everyone. Equator is how much degree? This is how much degree? North or south? This is how much degree? To the north. Oh, south there. That's it. This is which pole? This is which pole? ये तो सबको मालूम है ना? And if I ask you where India is located, this is Cancer. This is Capricorn. Where India is located? India is located in the northern hemisphere and towards the eastern side. So I can say somewhere here. Abhi, when you look at this map, आपको लगता है कि सर ये तो नॉर्थ है, तो ये साउथ होना चाहिए. But इधर भी नॉर्थ लिखा है, इधर भी नॉर्थ लिखा है. Is it mistake? No mistake. Why? Very good. Now look at the longitudinal extent. If I look at this part of India, I say this is west. है ना, महाराष्ट्र इधर ही है ना. And east is Bangladesh. Calcutta, Bengal. But इधर देखो, east or east. So what I generally say, India is located in which hemisphere? India is located in northern hemisphere. Mainly which side? Eastern side. Sorry, eastern side. So when I am putting latitude, both the places I am writing north. When I am writing longitude, both the places I am writing east. Abhi samajh mein aaya? Pakka. Will you learn this by heart? So ye line likhna, which I am giving you. India is located in northern hemisphere in a globe. India is located in
northern hemisphere of the globe in the eastern side, towards the eastern sides, not in, towards the eastern side. Now, is this confusion clear? So next time you don't ask me, sir, north south की जगह पर दोनों जगह पर north है, east west की जगह पर दोनों जगह पर east ही है, because India is located in northeastern. Draw the small globe somewhere down. Use a pencil, don't use a pen. And जैसा मैंने देखा है इंडिया को, अगर आपको properly इंडिया बनाने आए तो well and good. आपका नाम क्या है? श्रेया. ये जो आपने किया है ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर. ये आपका मार्जिन है ना, यहाँ से ये आपको लिखने के लिए एक्चुअली दिस शुड बी मिनिमम. अभी ठीक है, फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग सो राइट. India site and location, draw all this. Shall we proceed? Okay. Now, when you move away from location, let us come down to page number 134 of your volume. ठीक है, ये भी करता हूँ. First, we are in page number 134. India is a vast country. Underline that word vast. Only underline that word vast. Next, it is the 7th largest. Underline 7th largest. Next, open bracket. Come on, I want girls to read first in together. Which are the 6 countries ahead of India? Start. China, Canada. ओए, देख के भी उल्टा. चाइना किधर सेकंड आया? I'll also join with you. Come on. First, Russia, Canada, USA, China, and Australia. Come on, repeat all the 3. Wait. Russia, Canada, USA, China, Brazil, Australia. What are all these 6 countries which are ahead of India? In what sense? Usko bola. And these countries are ahead of India in what sense? Population? Yeah, these 6 countries are ahead of India. You accept? On what basis? तो भाई साहब का ध्यान ही नहीं था. You tell me on what basis? Size. Geographical area. Say it again. Come on. You only read the first line again. So India. Size का नीचे वाला first line. भाई साहब, what are you tantering? Size करके heading है ना पेज नंबर 134 में. उसमें first line read करो. India is a vast country which lies in the south of Asia. It is the 7th largest country of the world after Russia, Canada, USA, China, Brazil, and Australia. तो ये 6 countries इंडिया से किस एंगल से आगे है?
but which land? Agricultural land. तो अमेरिका तो हमसे बहुत कम एग्रीकल्चर करता है. अमेरिका का ओनली 9% है, इंडिया जबकि 46% एग्रीकल्चर करता है. Come on. You tell me. Geographical land area से total इंडिया के पास कितना है और उतना है, समझा? Okay, let's go ahead. Its area is about underline 3.28 million. Only underline that square kilometer. It is about, वो भी underline करो, 2.42% of geographical area of the world. अभी ये पूरा notebook में लिखो. I'll be giving it. India, the 7th largest country in the world. India, the 7th largest country in the world. Hyphen, its total land area or geographical land area. Its total geographical land area. Hyphen, 3.28 million square kilometers. Careful, huh? 3.28 million square kilometers. Semicolon. You understand what is semicolon? Dot and comma. Which is 2.42%. 2.42% of world's geographical area, which is 2.42% of world's geographical area. Is these two understandable? ये 2.42 क्या है और 3.28 क्या है? India is the 7th largest country in the world with 3.28 million square kilometer total geographical area, which is 2.42% of all geographical area. Now, who can make me understand? मुझे confuse हो रहा है. ये 3.28 क्या है? 2.42 क्या है? Yes. Let tell you name first. Aditi. Come on, Aditi. So 3.28 million square kilometer is geographical area of India. Area of India in the world. Sure. Now you look at the world geography. If I want to tell you more than 75 countries, 75% or more than 90% of the countries are northern hemisphere. South में कोई country है नहीं, कोई नहीं है. We have Australia, Africa में not me, and we have New Zealand. In fact, some people say Australia is not a country. फिर क्या है? It's a continent. Have you at least seen Australia in television? Do you like it? Want to? Australia is only 65 million years ago बना है. जबकि अगर मैं अपना हिमालय का बात करूं, हिमालय is the youngest mountain in the world. उसका एज है 75 million years. Are you understanding? मतलब हमारा हिमालय से 10 साल पहले ही ऑस्ट्रेलिया बना है. 10 million years बाद में बना है. That's why Australia is so much rich flora, fauna. You understand what is flora, na? और इंडिया का डेट पूछो. India is close to 7,000 years old. 7,000. जब पूरा धरती में कुछ था भी नहीं, हमारा हिंदुइज्म in the form of Adi Sanatan. There was no religion. You know almost. I think history teacher might tell you. So we believe only one thing. What is that? That India is located in northeastern hemisphere. उसका total geographical area 3.28. But आप पूछेगा सर इंडिया का एरिया वर्ल्ड एरिया में कितना कंट्रीब्यूशन है? कितना कंट्रीब्यूशन है? 2.42. देखो इंडिया इतना बड़ा कंट्री है. कितना बड़ा है? 7th largest.
और उसका कंट्रीब्यूशन देखो. इमेजिन सिंगापुर. सिंगापुर सुना है? सिंगापुर को अगर मैं मैप में दिखाऊं ना, सिर्फ इधर किधर ही तो है, एक रेड डॉट लगा. पब्लिक क्या है? सिंगापुर. तो सिंगापुर का कंट्रीब्यूशन सोच लो 0.00 कुछ 1% है. Because entire country you can go around in your own car if you have it in 1 hour 35 minutes. But I promise, not promise, I worked in that country for 4 years. उसके बाद ही मैं यूपी में आया. उसके पहले भी यूपी में था. That country has planned the city in such a way, आपको जो यूके अमेरिका में नहीं है वो पूरा फैसिलिटी उधर रखा है उसने. हाँ इतना. That's why Singapore is Singapore. सुना है सिंगापुर के बारे में? It's a very Mediterranean type of climate. What is Mediterranean? Every day, literally, you will get heavy rain. Morning till I think 2 o'clock or 3 o'clock, hot sun. फिर 3:30, 4 बजे से लेके 6 बजे तक heavy rain. हाँ, फिर तो कंट्री बारिश में. हाँ, कुछ नहीं, full concrete. हर जगह अगर ये बिल्डिंग से आप दूसरा बिल्डिंग जाएगा, they put the footpath with all beautiful, the cleanest city. But हम इंडियन जाके उसको भी. Why I'm giving this example? That is why the country's contributions are. Which is the first largest country? Don't you think that contribution to the geographical area is big? Then second, Canada. Canada is also huge. Sorry to say, उधर भी मैंने 2-2.5 साल काम किया. उसके बाद फिर सिंगापुर गया. I was so happy to go to that country till the winter did not start. All were frightening me. I said, I will ready to run away from India because of this hot. मैं winter कितना भी रहेगा सहन करेगा. कुछ नहीं. पहला दिन winter का start 10 डिग्री गिरा. 10 डिग्री मतलब समझ जाओ, हमारे लिए तो हालत खराब. सर मुझे कुछ लोकल फ्रेंड्स थे अमेरिकन्स मेरे. Now you are going to enjoy the winter. Third day, the temperature went to 0 degree. फिर मैं और थोड़ा टेंशन में यार ये क्या मजाक हो रहा है यार. Now you will enjoy more. Next 6 months, the temperature never came 0 and above. -1, -2, -3. The only day I remember it was -9. फिर मैं बोला ये कंट्री में मरने के लिए आया क्या? और किसी को नहीं बोला, अपने आप को. Because my mother. अभी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है. अभी आप तक जीने के लिए क्या? नहीं मैं नहीं. And when I call my family members here, they will all be sleeping. क्यों सर? Morning 8 या evening 9. 12 घंटे का difference. Plus, they don't calculate distance in kilometers. Miles. Winter आएगा तो गाड़ी 2 घंटा आगे चले जाता है. Summer आएगा तो गाड़ी 2 घंटा पीछे ले जाता है. मुझे ये क्या नाटक है तुम लोग का? Daylight saving. मैंने बोला ये कंट्री अच्छा है बट हमारे लिए सूट नहीं करता. But somehow I pulled on. But then I got a call from Singapore University, तो मैं वहां से सीधा. And when I landed on Singapore, temperature was 35 and 37. मैं बोला वाह ये है आमची ऊपर. तो उसने बोला रुक जा अभी टेम्परेचर बढ़ेगा. मैं है अभी -9 देख कर आए. ये क्या है? By 12 it was 39.5. यार ये तो टेंशन है. मतलब हर रोज ऐसे ही रहता है. कभी-कभी तो 41, 43, 44 भी जाता है. मुझे अच्छा था कि मैं यूनिवर्सिटी में घुसता था, एसी कैबिन में रहता था और शाम को 6 बजे निकलता था. But every day I can't be inside the AC cabin. I understand. But India is such a good country. Are we facing any extreme like this? But for last 3 days, sir, it's very bad. देखो मैं कभी इतना पानी जिंदगी में नहीं पिया जितना मैं पी रहा हूँ. 4 lectures continuously I'll be shouting to the max without taking. But अभी 2 days से डॉक्टर ने बोला पानी पी वरना सलाइन ला के क्लास में जाना पड़ेगा. बोला ऑक्सीजन हाँ वो भी लेके जाना. अभी मैं आ रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे एक सिलेंडर आ रहा है, फिर एक सलाइन बोतल आ रही है. ये क्या पेशेंट आ रहा है हमको पता नहीं. Because the heat is so bad. I hope you understand what I'm saying.
Sir, this is. But do you think this is going to continue for a long time? Maybe few weeks, few days. उसके बाद बाउंस है कि नहीं? हाँ सर, जून के लिए अपना वेट कर रहा है. So we always believe when we were spending some time in such extreme. When I returned to India after 9 or 9.5 years, मैं अपना बालकनी का क्रो को भी 15 मिनट से ऐसे देखता रहता. Lovely bird. Crow, lovely bird. उस कब से? She used to say चिमनी बाई. I think sparrow मराठी चिमनी बाई होता है. हाँ. ये जिंदगी में तू देखा है, बट ये सब उधर दिखता नहीं. जैसा वो अमेरिकन 6 फुट का रहता है, उनका बर्ड्स भी इतना बड़ा रहता है. And it will be there on the roadside. हम लोग मॉल में जाता तो वो बाहर खड़ा रहेगा, कुछ सामान रहेगा तो बैग के साथ ले लेगा. तो यार इधर इंसान तो इंसान जानवर थे. एंड फिर रात में मेरा लैंडलॉर्ड बोलता था रकून्स आएगा, रकून्स. तो ऐसे दिखा है रकून्स, मतलब छुआ रहे. लिटरली जिस दिन रकून्स को देखा ना डर. It was as big as a like dog. And he was trying to, where is the raccoon? Where is it? Like इतना था raccoon के लिए इतना बड़ा baseball bat लेकर आया. The next day he showed me raccoon hitting the raccoon. इतना बड़ा है. चूहा. Raccoon चूहा नहीं है, तो उधर चूहा. तो यार ये country है ना, थोड़ा सा हमसे tension है. And when the winter starts, no single, sorry, my ने बोलेगा कुत्ता बिल्ली walks on the road. Everyone have a car. Whereas we poor, ये क्या चल रहा है? अच्छा मेरे लायक means I can't forget many a times the gentleman who is driving a car will say, hey, where are you going? मैं बोला downtown. Please come into my car. I know पूछेगा भी नहीं कि कौन है तू, किधर से आ रहा है. और मुझे डाउनटाउन मतलब सोच लो यहाँ से मुझे मेरा यूनिवर्सिटी बीटी में है, मुझे खारघर से बीटी तक कोई भी लिफ्ट दे दे. Can we imagine मुंबईकर कुठे जायचं तुम्हाला? इकडे माझ्याकडे टाइम नाही. तो पूछ क्यों रहा है? The people are so nice and gentle, but हमारे इधर अच्छा है ना, रुको कुठे जायचं तुम्हाला? असं का? रुको. Whereas there if I say I need to, you are a new person next time. Don't worry, I'll guide you. वो गाइड ही नहीं करता, कभी कभी बोलता चल मैं छोड़ के आता हूँ, मुझे सारी उम्मीद को डोंट वरी मैन, आई लीव यू. हमारे इधर कैसा गाइड करता है किधर जाने का? खारघर हीरानंदा नहीं, बैठ अभी बता. खारघर से सीधा जाने का. सर कितना सीधा? तू चुप रहे यार. सर मैंने सुना हीरानंदा नहीं पहले आता, वो बाद में, तू पहले सुन. सीधा 15 मिनट अंदर जाने का. सर मुझे किसी ने बोला 5 नहीं, वो रॉन्ग बोला उसने. फिर मुझे ऐसा करते करते इस्कॉन टेम्पल तक छोड़. सर मैं इस्कॉन टेम्पल नहीं जाने का. तो क्या होगा? यूटर्न मार वहां से. सर मान लिया, फिर से आजा लंबा, फिर आजा अपने रोड पे, मतलब फिर देख सामने क्या है. सर इधर ही है हीरानंदा. हाँ तो मैं तुझे खारघर घुमा के दिखा रहा था ना, तो इतना भी टाइम नहीं. तो वी आर परफेक्टली गाइडिंग और मिसगाइडिंग. And many a times in America I have said they use very popularly, very sweetly, do you use Google? I said yes, please use it. मतलब वो क्या बोल रहा है? गूगल मैप ओपन कर बुद्धू, वैसे क्या पूछ रहा है? पर इधर हमारा मुंह में गूगल माउथ रखा है ना? कहाँ जाने का तुमको? मतलब वो बेचारा बस स्टॉप में खड़े खड़े बोर हो रहे, तुमको अच्छा कैसा बोर करे. अरे ये क्या है? कुछ नहीं है, ये बस पकड़, इधर उतर, फिर वो उधर, लेफ्ट में जा, फिर राइट में जा, फिर मिल गया. नहीं, मैं भी ऐसे ढूंढ रहा हूँ, तू भी ढूंढ. So we always believe we people go any part of the world, we Indians will never change. And होना भी नहीं चाहिए. सर मालूम कैसे पड़ेगा मैं इंडियन, है ना? मुझे अभी भी याद है जब टिम हॉर्टन्स का कॉफी पीते थे हम लोग, जब ठंडी रहता था -9, I can't hold the cup of coffee in one hand. ऐसे नहीं कि बहुत गर्म, गर्म तो है, ठंड इतना ज्यादा है, ऐसा पीना पड़ेगा. फिर दोनों हाथ. तो अमेरिकन इतना लंबा सांड आता है, 1 cup of coffee please. यार इसके सामने आपने तो कचरा हो है ना. अभी मैं टॉल और हाइट तो नहीं है, बट एटलीस्ट कप तो फैशन ले लेने का. मैंने भी बहुत बार ट्राई किया. 1 cup of coffee please, she gives me. तो इतना गर्म था. Don't copy American, be an Indian only. So the extreme climates you find everywhere.
But India is one country where you do not have extreme. Why? Because it is in the which hemisphere? Tropics, and it is in northeastern hemisphere. Is it okay? Will you forget this? Will you forget this? No. Okay. Sure. Let's proceed. He was reading, na? Go ahead. Second. The north-south of India. Underline that word north-south. And please underline 3214. Ye kiska volume? I've got me one. What's the page number? 124. Oh, thank you. Chale, go ahead. The north-south extent of India is exactly. Look at the map, it is to the right. North-south मतलब कहाँ से देखने का north में क्या है? Jammu and Kashmir. Down क्या है? Kanyakumari. So what is the total length they have given in the side? How much it is? 3214 kilometers. Chalo. It spreads from snow-covered Himalayas in the north to the southern tip of At Kanyakumari. Underline snow-covered Himalayas and underline Kanyakumari. अब ये sentence notebook में लिख दो. I'll give it. The north-south extent of India. The north-south extent of India. How much kilometers? 3,214. 3214 kilometers. Starting from Himalayas in the north. Starting from Himalayas in the north to Kanyakumari in the south. Starting from Himalayas in the north to Kanyakumari in the south. Hey, who can tell me southernmost tip of India? Very good. What did you say? Kanyakumari. Who is correct and who is wrong? Both are correct. Indira Point jo hai na, now it has submerged inside the water. If not, Indira Point is the last point. वहां से फिर श्रीलंका route start हो जाता है. मुझे आयरोली का सुन. राम सेतु बोला राम है उधर सेतु भी है. You know what is this Ram Setu? What is Ram Setu? Now what is it? But who is the engineer of this bridge? Ram only. Hanuman ने बनाया. I don't know. आप लोग ने रामायण ठीक से नहीं देखा? राम के बाल से. कौन थे? हनुमान. Neil and Angad. But in reality, American scientists have discovered that the rocks which were used were calcareous rock. You know what calcareous? Calcium rocks. When you put it on the water, it won't submerge. It will float. They say half the bridge is washed away by the water, but half the bridge is even visible from the space. Many people do not believe Ramayana, who is Ram, who is Sita, but there is evidence there. And even today people say there was a king in Colombo, Sri Lanka, and that kingdom was 1,000 times beautifully done, and it was Ravana. If you believe in Hinduism, sorry, I'm not a religious, but I'm saying Ravana was considered to be the #1 devotee of Lord Shiva. And he was a true devotee of Shiva. But usko apna power itna घमंड हो गया, to break his घमंड only this entire Ramayana was done. If I tell you these are shocking news, I don't know, somebody might be knowing. Sita is the daughter of Ravana. Sita is the daughter. वाल्मीकि ने रामायण में भी गड़बड़ की. जब सीता का बर्थ हुआ तो उसको जो आकाशवाणी बोलते हैं, I don't know what is the channel, it was coming to the light of Ravana that because of this girl child you will die. उसने बोला अच्छा, he has got the
what is that, blessings, no human being can kill him. No avatar of God can kill him. तो ऐसा कैसा ये बच्चे से मैं मरेगा? ये orders the courtier to kill this child. But ये बेचारा लेके जाता है, एक वुडन बॉक्स में रख के जमीन में दस देता है. घड़े में. हाँ, घड़े में नहीं, ये बॉक्स है. And that is a place close to Nepal called as Janakpur. And look at the beauty of 2 minute बोलो चलेगा ना आपको रामेन? And then in that kingdom there is no rainfall for long time. Janakpur का महाराजा महाराजा. And they do not have their own child also. तो फिर एक ऋषि बाबा आता है, ऋषि साधु बाबा. Then he says, इस जमीन के टुकड़े पर हल चलाओ. क्या चलाओ? हल चलाओ. ठीक है, तो बारिश गिरेगा. तो हल चलता है, एक जगह पर हल फंस जाता है. उस जमाने का ना ट्रैक्टर तो नहीं था. महाराज बोलते ये क्या है, इसको खोदो. They open the box, there is a small little girl. See Sita? And when they took their child in their hand, रानी तो बहुत खुश. इतना टाइम में वो बच्चे अंदर है, वो मरा भी नहीं. हाँ, like she got the blessings that she will not be killed through fire, not through inside the water, inside the earth. She was a God-blessed child. And when she takes the child, then there is heavy rainfall in the kingdom. Luckily, that is, I think, I don't know how much distance. The birth of Ram is also take place close to that area only. फिर वो कभी बड़ा हुआ, कभी शादी हुआ, वो सब बाद में. Then they come to this वनवास ना, वनवास. तो कोई रावण का कान में बोल देता कि जिस लड़की को तूने मारने बोला वो अभी तक जिंदा है. अच्छा, वो जिंदा है तो मैं मर जाएगा. अभी एक सबको तो बोल नहीं सकता है ना. तो he sends his sister. What was शूर्पणखा. शूर्पणखा कोई ब्यूटीफुल ऐश्वर्या तो नहीं थी. वो भी रावण की बहन, तो वो भी डरावनी रहेगी, है ना. So she came to the jungle to, अभी ये बोला नहीं कि वो मेरी बेटी है, बस इतना बोला कि कोई दो साधु संत है, वो कौन है जाके देख कर. तो बेचारी ये हिडिंबा की तरह दिखने वाली एकदम ब्यूटीफुल बनकर गई. और लक्ष्मणा was cutting woods. हाँ, so she was very happy. लक्ष्मणा was well built fellow. वाह, हमारे राज्य में तो कोई भी ऐसा. हाँ, ये तो मैडम को लगा थोड़ा सा अपना नंबर डायल करते हैं उधर जाके. मैडम ने बहुत ट्राई किया, बट लक्ष्मणा बोला सॉरी देवी जी. देवी जी कौन, तेरी माँ? नहीं, मैं तो अपना भैया का सेवा कर रहा. कौन भैया तेरा? बोला मेरा राम, मेरा भैया. सॉरी, मैं थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ. सो दैट फिर वो बोलता है कि मेरा भाई जो बोलता है वही करेगा. सच्ची? इसको क्या लगा, चलो अभी भाई के पास जाएंगे. एंड शी इज मोर हैप्पी टू सी राम. राम इज मोर हैंडसम देन लक्ष्मण. अरे यार, ये कौन है भाई, दोनों इतना हैंडसम. सोच लो, जॉन अब्राहम और सलमान खान है, पता नहीं कौन है, बस ऐसे बोला. तो शी वांट्स टू डायल द नंबर देयर आल्सो. वे राम है, पतिव्रता नारी है, नार है बेचारा. बोलते देवी जी, तू भी देवी जी मत बोल मुझे माफ करना मेरा बहन, मेरा ऑलरेडी शादी हो चुका है. बोले तेरा शादी कैसे हुआ, क्यों हुआ? बोलते मेरा जो वाइफ है सीता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ. बोलते यार ये कौन है दोनों भाई. Then again she comes to Lakshmana to redial the number. So Lakshmana is very angry. बोलता एक तो तू मेरा भाई के पास जाके बोला कि मैं तेरा वाइफ को मार देगी तो तू मेरे से शादी करेगा क्या? ऐसे भी वो बोलती है. तो राम तो बेचारे नहीं, देवी जी ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं मेरा पत्नी के बगैर, वो डायलॉग छोड़ देता. And Lakshmana becomes very angry. She is forcing. So he takes a baण, the arrow, and cryingly she flies back. अभी ब्रदर के पास जा रही है, who is the most powerful demon in the world. अभी उधर जाके बोलेगी अपना प्रेम लीला, नहीं बोल सकती. तो she changes the story exactly other way around. बोलते पहले तो मैंने बोला रावण का बहन, उन लोग तो तुझे पहचानता भी नहीं है, कौन है तू? बोला हाँ ऐसा बोला. अब रावण का रिएक्शन सोचो, अपना डायलॉग कैसे निकला. फिर मैंने बोला वो ग्रेटेस्ट महाराज है, वो रहेगा, हम उससे भी बड़ा, ऐसा बोला उसने. फिर मैंने बोला मेरा भाई तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा, एक लड़के ने तो मेरा नाक ही काट दिया. फिर बोलते रुको, उनको मैं पाठ पढ़ाता. That is the time he tries to take a revenge on. But Valmiki writes the Ramayana when half the Ramayana was done.
half the Ramayana is not done, क्योंकि उसका ही कुट्टी में जंगल में ये दोनों लड़के पैदा होते हैं. कौन? लव एंड कुश, राम के दो लड़के हैं ना, वाल्मीकि के कुटीर में ही पैदा होता है, फिर वहां से वो कंप्लीट करता है. But there is a other historian, it is a true fact, कभी देखना गूगल में. His name is Kamban Ramayana. He is from South. उसने एक ट्रू स्टोरी लिखा है with evidence. Kamban Ramayana बोलता है. The hero of the story is not Ram, it is Ravana. Because Ravana was a true devotee, but he made a mistake of kidnapping the wife of Ram. And this mistake wants to be done so that he will be killed by whom? Ram. वरना तो उसको मारने वाला ये तीनों लोग में कोई नहीं. And Ram is a direct avatar of Lord Shiva. और शिवा ने ही उसको ये अवतार दिया रहता है कि तुझे मैं या मेरा ही कोई अवतार मारेगा और कोई नहीं मार सकता दुनिया में. समझा भी पूरा रामलीला क्या है? उसे बोलता रामलीला यही है रामलीला, और कुछ नहीं. And Ravana was a really powerful king, but made the mistake of kidnapping. और जिस वन में रखा था अशोक वाटिका, अभी भी वो जगह है. And even there is one of the museum, I don't know which place. I have gone to Palampur, but some other world. They say the Pushpak Viman, in which he kidnapped Sita, it's still there. And it can fly also. Before Wright brothers invented aeroplane, Pushpak Viman was there. अगर किसी ने आपको बोला कि इंडियन हिस्ट्री ये है वो है, इंडियन हिस्ट्री तो 7000 साल पुराना है. You know Saudi Arabia? Is it a Hindu dominated country? नहीं है. There are more than 1100 शिवलिंग्स were found in that. शिवलिंग क्या यहाँ से चल के गया? And उनका जो मक्का है, मक्का, उसके अंदर भी शिवलिंग ही है. Very few people know this. उस टाइम का महाराजा ने इतना बड़ा दीवार बना दिया और फिर ग्रीन क्लॉथ से कवर करके पर्शियन में लिख दिया. Because that Raja was told by a saint, जिस दिन भी कोई प्योर हिंदू बिना नॉनवेज खाए अगर आके तेरा शिवलिंग पर हाथ लगा दिया, Saudi will be demolished. I don't know if you have any Muslim friends, please don't say them कि शिवलिंग की मत पूछो, they will get angry. उनको एक पानी पिलाया जाता before getting inside the Mecca. उसको लोग झमझम पानी बोलते हैं. अरे ये क्या है झमझम? You go to Hindu temple, they give you this ना, और हमको पीते हैं. उसमें तो तुलसी का स्मेल आता है. तो ये जो पानी रहता है उसमें फैट्स ऑफ काउस मिलाया रहता है. अगर गलती से किसी मुस्लिम ने कभी नॉनवेज नहीं खाया है, बट उधर जाने से पहले ये झमझम का पानी उसको पीना ही पड़े. हाँ, it is correct. And if he gets in and if he keeps the hand on that shivling, then done. और वो लोग ने कवर कर दिया. अभी nobody knows there is a shivling. Last but not the least, even when God Jesus was born and brought up in Jerusalem, na, Bethlehem, he came to India when he was 19. Until 30 he was here only. आदि शंकराचार्य से वो पूरा पढ़ाई कर रहा था. ये मैंने बोलता हूँ, अपने पास प्रूफ है, एविडेंस है. When he returned to Jerusalem, he learned for 13 to 14 years Krishna Niti. Are you understanding the word? Krishna Niti. He took that same word to Jerusalem. What is the language now? Religion now we are studying? Christianity. इस्लाम बोलता है अल्लाह एक ही है, नूर है, एक छोटा सा डॉट है. आप अगर आज भी एक संस्था है, मैं उसका नाम बाद में बताता हूँ, बोलते हैं लॉर्ड शिवा इज ओनली द स्मॉल डॉट. इफ यू कैन क्लोज योर आईज एंड मेडिटेट, डॉट आपको भी दिखे. But it's very difficult. I am doing it for last 2 years. And then if you see the Christmas trees very carefully, small Christmas, small star, and there is one big star, बोलते यही मेरा God है. तो वो भी हमारा ही शिव है, but in a different name. But ये सब नहीं मानेंगे. Hinduism, there was no religion. It was called as Adi Sanatana. फिर इसी से निकला सारा. अभी जाके पाकिस्तान में ये बोलो, नहीं मानते. But there were many Muslims in India. उसका सरनेम हिंदू सरनेम है. कुछ उसका वो क्या है ना, मेरा दादाजी था ना, वो हिंदू था, फिर हम लोग कन्वर्ट हो. अरे मैंने बहुत सारे क्रिश्चियंस को देखा है, शादी में मंगलसूत्र बांधेंगे, टीका लगाएंगे, फिर चर्च जाते समय उसे मिटा देंगे.
ये क्या नहीं, वो हमारा शादी हिंदू रिलीजन में होता है, फिर हम लोग चर्च जाते हैं संडे से. मतलब स्टिल दे बिलोंग टू हिंदुइज्म. आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, बट you should understand from which religion you have come out. So if I get into geography, India was not the same India what you are looking today. What is that India called as? It was called as Akhand Bharat. अभी बीजेपी बोला कि अखंड भारत हम दोबारा बनाएंगे, हमारा इंडिया रहेगा अप टिल अफगानिस्तान. हाँ, अफगानिस्तान जन जाएगा, पहले पाकिस्तान को अंदर खींचेंगे. And that is true. Pakistan was with India, everybody knows. Correct? So this is what I'm saying. There are more reasons to be proud to be an Indian. मैं तो बहुत कम जानकारी रखता हूँ. I can tell you more also, but that is what we proud to be an Indian. और इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी में बोलूं, इंडिया पूरा दुनिया को 45% ऑफ नेशनल इनकम इंडिया का था, अभी ओनली 3%. ऑल थैंक्स टू द ब्रिटिश. आज भी अगर आप सोमनाथ करके एक टेम्पल है, शिव टेम्पल, so many times Ghazni and Gauri has looted that temple, so many times, but अभी भी कुछ हीरे, कुछ सोना. वो बोलते हैं टेम्पल्स का वॉल सोना से बनाया रहता था, फुल सोना. जब गए, अच्छा गुड यार, मैंने गए, सचमुच है, फुल वॉल्स आर मेड आउट ऑफ गोल्ड. यार इतना पैसा इन लोग के पास क्या था? अभी नहीं. हाँ, बट अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ये किया रहेगा. And that full shivling was made out of precious stones and gems. तो इनको वो सब देखा रहा नहीं गया. फिर अभी पाकिस्तानी लोग बोलता हमने आपको ताजमहल दिया, हमने आपको कुतुब मीनार दिया. तो मैं बोलता लेके चले जा. क्या तूने दिया? बोला ना लेके जा ताजमहल को. ये कैसा मजाक है? तू चुप बैठना. ताजमहल क्या तेरा, सॉरी टू यूज द वर्ड, तेरा घर से पैसा लेकर आके बनाया? हमारा इंडियन का ही टैक्स था ना. एंड उसमें भी एक सीक्रेट है, ताजमहल वाज नॉट फुल्ली कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां, इट वाज नोन एज तेजूर महल. भाई साहब ने फिर ऊपर से पोती कर दिया और बोल दिया जिस वाइफ का नाम से उसने बनाया उसका रहते ही इसने कितना शादी किया, किसी को नहीं बना. फिर बोलता मेरा वाइफ के लिए मैंने बनाया. एंड इवन कुतुब मीनार was considered to be a Buddhist minaret. उसमें सिर्फ 5 फ्लोर बनाया. कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके ऊपर बना दिया और 9 फ्लोर, बोल दिया ये मेरा है कुतुब मीनार. I can tell you all the Mughal buildings, either they demolish our temples or they reconstructed by renaming it. फिर अभी बोलता कि इंडिया में इतना इस्लाम है, हम लोग ना नहीं बोलते, रहने दो. But don't tell कि ये ताजमहल तुम लोग अपना घर से पॉकेट. Who is the founder of Mughal dynasty? Babur. When he came from Central Asia, आज का अफगानिस्तान, he did not have water to drink in his country. इधर जब आके इंडिया में सेटल हुआ, he loved watermelons. No watermelons. And he loved the country India with so much water, so much agriculture. वो बोला मैं इंडिया छोड़ के कहीं नहीं जाऊँ. But उसने भी लूटा इंडियन टेम्पल्स को. अकबर द ग्रेट. Sorry मैं ज्यादा बोल रहा हूँ. Why I'm saying you should know all this. Next time anybody comes and bash with you, रुक जा. हेलो सर, एक बंदा बहुत बड़बड़ा रहा है, ये जरा फोन बंद कर. मेरा हिस्ट्री टीचर बहुत नॉलेज. So you will not open the mouth. Even the shlokas that they write Persian, they say these are Sanskrit shlokas only. And Adam और Eve जो क्रिश्चियनिटी में है, उसका भी अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ेगा ना, वो आदम और ईव नहीं है और ही कुछ है. इन लोगों ने सब अपना अपना रिलीजन में जोड़ दिए और हम लोग बोलते हैं the first man on this earth is Adam and Eve. No, they were not. हमारा रिलीजन 7000 साल पुराना है और तुम्हारा रिलीजन सिर्फ 1500 साल पुराना है. तो कौन पहला बोला रहेगा? आदि सनातन. So when I speak about India geographically, you should understand India historically also. Last, we run for Oxford, Cambridge. Heard about Nalanda University? Students from abroad will come here to study in one classroom. Classroom nahi rahega, hall rahega. 1,500 students. Imagine no mic facility. इधर अभी 10-20 हो जाएगा तो फिर थ्रोट का बात लगता है. So this is India. I'm not saying this was India. This is India. So don't we think we are proud to be Indian today? So next time any foreigners or any Indian, India में क्या है,
इंडिया कचरा, इंडिया वो है, जब कचरा तूने बनाया, करेक्ट? Shall we proceed? चलो, द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट लिख दिया ना आप लोगों ने 2933 नोटबुक में लिखा, ईस्ट वेस्ट, हाँ नोटबुक में नहीं लिखा, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इधर मार्क कर लो 2933 kilometers exactly. The latitudinal and longitudinal extent underline is about 30 degree. इन दोनों का एवरेज गैप. Next line, India is the 7th largest, underline. Land boundary of India. Did you see land boundary? How much it is? 15,200. अगर आपको इसका डिस्टेंस नहीं समझ में आता, सिंपल वे में बोलता हूँ, यहाँ से पुणे सिर्फ 400 किलोमीटर है. How many hours we travel? 2 घंटा, 3 घंटा, या अगर ट्रैफिक रहेगा तो 4 घंटा. सोचो अगर 15,000 किलोमीटर ट्रैवल करने का तो कितना टाइम लगेगा? So it is very huge. ये तो उसका लैंड बाउंड्री है. Come down to the water boundary, including Andaman Nicobar, Lakshadweep, circle that. 7,516 kilometer हमारा water boundary. If somebody asks you why this Indian Ocean is called as Indian Ocean, because India का जो water boundary है सबसे बड़ा है. फिर चाइना घुस जाता है. चाइना को कहीं भी ऐसा लोग दिखा ना, तुरंत बोलेगा ये तो मेरा colonial cousin है, ये मेरा चाइना है. मतलब भाई वो चाइना नहीं है, वो तिब्बत है. अभी they are not leaving even Arunachal Pradesh, but India is banning the Chinese कि ये हमारा गांव है. वो बोलते नहीं नहीं हमारा है. फिर बोलते इधर चाओ चाओ मियाँ मियाँ कोई नहीं मिलता, तू जा चाइना में. तिब्बत तो उनका था नहीं, बट तिब्बत वो लोग ने लेके रखा है. ओके चलो, लेट्स प्रोसीड. बाउंड्रीज. इंडिया इज, सॉरी आई वाज इनटू दैट फ्लो टेलिंग सो मेनी थिंग्स. नेक्स्ट टाइम से थोड़ा स्टोरी कम करना चलेगा ना, या और चाहिए? ओके, पेज नंबर 149 ऑफ योर वॉल्यूम. टिक क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 1. Everyone will complete this using a pencil in the wall. 1, 3 and बस उतना ही. बाकी सब हम लोग ने नहीं किया ना, किया क्या नहीं बस. So 2 questions as an assignment which you will be completing and meeting me in the next stage. Will do? Happy? This method of teaching will do? और थोड़ा strict हो जाओ. Nice. Thank you. Don't forget your volume and silence.